17th November is National Epilepsy Day, and November is noted as an epilepsy awareness month. And we do multiple programs for awareness campaigns for epilepsy. And Niche Advocacy Foundation, which is a foundation for advocating for emotional fitness related issues. So we have taken up this cause of epilepsy for the month of November. This occasion of 17th November, National Epilepsy Day, we are running these question answers by our interns of Niche Advocacy Foundation and myself, Dr. Purnima Gauri, neurologist and director of Niche Advocacy Foundation. So do go through all the questions that we have put up and my answers on the same. And if you have any questions, feel free to ask them and we will definitely do justice to them. Thank you so much. फर्स्ट मिथ इज पीपल विद एपिलेप्सी आर मेंटली इल और इमोशनली अनस्टेबल. मतलब ऐसे कहते हैं कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, गॉन कैसे, और बोलते पागल है. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? This is absolutely not true, because epilepsy is the disorder of the brain. In this, what happens is that some of the brain cells become autonomous. कुछ brain की पेशियां होती है जो अपने आप ही उत्तेजित होने लगती है और उसकी वजह से शरीर में दौरा आता है. So epilepsy is a medical disorder of the brain, and it can be treated with medications. People believe that epilepsy can't be controlled effectively. So how true is that? Unfortunately, people have this myth, but the fact is that 80% of people with epilepsy can be very well controlled with medicines and they can live normal lives. So 80% is a much bigger number than 20%. So मेजॉरिटी जो लोग होते हैं जिनको एपिलेप्सी है वो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं और WHO की गाइडलाइंस है कि इन लोगों को पेशेंट भी नहीं बोलना है. These are to be called as people with epilepsy. That much normal life they can live. Julius Caesar, Alexander the Great, these two are well documented people with epilepsy from history. And Tony Greig, John T. Rhodes, these are cricketers associated with epilepsy. Many of my patients are working in IT companies, some are doctors, some are lawyers. So 1 in 100 people have epilepsy and 80% of them can live normal lives with proper and timely medications. So that is the fact. The third myth is that women with epilepsy shouldn't or can't get pregnant. So is this true, ma'am? No, this is not true. Very few epilepsies are heritable. और हेरिटेबल एपिलेप्सी जो है वो फादर से भी आ सकती है, मदर से भी आ सकती है. Whether the mother has epilepsy or the father has epilepsy has nothing to do whether the child will get epilepsy from the parents. तो दोनों में से किसी को भी एपिलेप्सी होगी तो चांसेस उतने ही है जो कि कम है. बट विथ विमेन इन एपिलेप्सी द प्रॉब्लम इज अगर उसको बहुत सारी दवाइयां चल रही है तो ही उसके बेबी पर बुरा असर होगा. But now with medical progress, which has happened so much, we know that as doctors, we know which are the medicines which don't cause problem on the fetus, on the developing baby. So we choose those medicines for the woman who is getting pregnant. So what we advise as neurologists that pregnancies should be planned pregnancies. So that woman should discuss with her husband, with her family, ki haan, ab seizures are under control. And let us meet the neurologist and say that we want to have a baby. Then what we do is that we switch her over to medicines which are acceptable for the baby, and we switch her to doses which are minimal. And then with this particular very, very monitored and controlled situation, then we advise the pregnancy to happen. So with proper advice and proper guidance, the pregnancy can be extremely safe. And many of my patients have had babies and they have grown up to be non-epileptic children without any problems whatsoever. Main thing is that the pregnancy has to be a planned pregnancy and the neurologist has to be involved in that decision. So ऐसा बिल्कुल नहीं है कि epileptic women cannot have babies. Next myth is you can't live a full or normal life with epilepsy. ऐसा कहते हैं कि तुम आसान जिंदगी बिता नहीं सकते हो. You can live a normal life. Of course, for the first 6 months when the treatment is started, there are a few restrictions. क्योंकि हम जब नई दवाई शुरू करते हैं तो हमको मालूम नहीं होता कि वो ही दवाई काम करेगी कि नहीं. So इसलिए for the first 6 months we call that as an observation period. And the person with epilepsy is supposed to follow strict rules about lifestyle. Should not drive alone. Should not go alone anywhere.
should not go for swimming, should not be near fire, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर फिट आ गई तो उसको खुद को हार्म हो सकती है, या फिर if he or she is driving and has a fit, then his or her own life and plus other people's lives can be in danger. So which is why for the first 6 months the person will have restrictions. Once we know that ये दवाई काम कर रही है, फिर उसको हम धीरे धीरे ये सारे restrictions हटा देते हैं, and that person can live a normal life. Of course, there are certain professions in which having epilepsy is considered as a lifelong risk. For example, you cannot be a pilot, but then even I cannot be a pilot with my high myopia. So, but I think I'm living a normal life. So I'm a doctor. For example, I'm a neurologist. I could be having epilepsy and I'm still doing my neurology practice. So I think I'm living a normal life. So that kind of a normal life, 80% of people with epilepsy can live after first 6 months of observation period. And in this normal life, they will have to follow the same lifestyle measures which are recommended for everybody. For example, they have to take enough sleep, they have to have meals on time, स्क्रीन टाइम डिसिप्लिन उन्होंने फॉलो करना चाहिए, हफ्ते में 3-4 दिन तो भी एक्सरसाइज करना चाहिए. सो दीज आर द लाइफस्टाइल मेजर्स वी एडवाइज, एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली दीज लाइफस्टाइल मेजर्स आर मेंट फॉर एवरीबॉडी, but a person with epilepsy has to be more careful. So there are some celebrities also who have epilepsy, so they follow guidelines कि 24 घंटे में 7 घंटे नींद होनी चाहिए, मेरी दवाई मैंने टाइम पे लेनी चाहिए, मैंने खाना टाइम पे खाना चाहिए. Once these measures are followed, then you can live what is called as a near normal life or a normal life. But let me tell you that it is more challenging because they have to break several glass barriers in their lives. They have to break the barriers of people telling them कि तू ये मत कर, तू वो मत कर. So I have some of my patients who have gone abroad for further studies, have taken up jobs. So it is your mindset and it's your fear and it's these myths that hold you back. Epilepsy does not hold you back. As I said, Julius Caesar and Alexander the Great had epilepsy. उनको epilepsy ने नहीं रोका. Most of the people believe, unfortunately, even these days, even rural and urban area people, that epilepsy or fits म्हणजे देवाचा कोप. How true is that? Yes, Aditi, this is a very good question, because in spite of us being in 2020 and going on to 2021 now, people still have these myths. उनको लगता है कि मिर्गी आती है मतलब या तो देवाचा कोप, मतलब something negative by God, या फिर किसी को लगता है कि भगवान दर्शन दे रहा है उसमें से. So both these things are wrong, because as I said, it's a biological disorder, it's a medical disorder, because some neurons in the brain become agitated, autonomous. जैसे किसी हमारे दीवारों के वायरिंग में शॉर्ट सर्किटिंग होता है, और if you put insulation tape, it gets better. So the same thing is happening in brain. तो ये ना भगवान का कर्ज है ना भगवान की दून है. It is a medical disorder of the brain. So the next myth is that marriage can cure epilepsy. In many villages in India, they believe that male patients can be cured if they are married. So is this true, ma'am? Thanks, Harsimran, for this question. And as you have seen in your questions itself, all of you, कि India is a country of paradoxes and we have opposite views. एक यहाँ पे है कि मिर्गी वाली औरत ने शादी नहीं करनी चाहिए, और कुछ villages में ये myth है शादी करने से मिर्गी ठीक हो जाएगी. So this is a complete myth. Marriage neither improves or worsens epilepsy. Some people feel that way for males, that they feel probably if he has a life partner and is satisfying the sexual drives, the epilepsy will go away. But this has nothing to do with that. Again, let me say once again, at the risk of sounding like a broken record, that epilepsy is a disorder of the brain. It occurs because of electrical disturbances of some neurons in that person, which start throwing discharges on their own without reason. और इस वजह से होने वाली ये बीमारी है, इसका शादी करने या ना करने से कोई भी संबंध नहीं. बहुत सारे जगह पे ये चलता है कि women with epilepsy should not get married as they cannot have children, कि उन्हें बेबीज नहीं हो सकते, they can't get pregnant. तो क्या ये सच है या मिथ है? Aman, that's a very good question. We have covered this question a little while ago, but still I would like to add a few things. That fertility in epilepsy is definitely an issue,
but with modern medicines available, with modern approaches available, we are able to deal with it. And अगर ऐसा हमें समझ में आता है कि ये एपिलेप्सी में इनहेरिटेंस का चांस ज्यादा है, या फिर दिस वुमन इज ऑन वेरी हेवी डोसेज ऑफ मेडिकेशंस, तो हम ही एडवाइस देते हैं कि नहीं, आप कंसीव मत करना. But most of the time when we say that 80% of people can live normal lives, these 80% of people, they are well controlled. And in these people with epilepsy, the women most of the time do not have any problem in conceiving or delivering the baby, and even breastfeeding is allowed for these women. So best thing is to consult your doctor कि हमारी जो बेटी है या हमारी जो बहू है, या the woman herself can consult the doctor that I have epilepsy, I am on so many medications, do you think it is safe for me to conceive? And most of the time, 80% of the time, it is safe for her to conceive. And if she is on medications which are going to have some bad effect on the baby, and she is well controlled, we can switch her over to medications which are safe for the baby. And so let me repeat that pregnancies in women with epilepsy should be planned events. You can't die from epilepsy is the myth or the truth? This is an important and complex question. The answer to this is not straightforward, because in epilepsy, there is an increased chance of depression. So suicides can be higher in people with epilepsy. So that can be a cause of death. And depression can be because of the social stigma for epilepsy. So the myths that we are discussing right now, they themselves can be the reason of depression in a person with epilepsy. However, in addition to this, people with epilepsy who are not controlled, so they are the patients with epilepsy. So the 20% of people whose fits are not well controlled, so in them, the chances of SUDEP, SUDEP, sudden unexplained death in epileptic persons. So this can be higher. These SUDEPs can occur in people with epilepsy whose seizures are not controlled. So during a big seizure, the respiratory center of the brain and the cardiac center of the brain are also affected. And sometimes you can get either a cardiac arrest or a respiratory arrest. Lots of academic debates go on that what is the actual mechanism of SUDEP. But the fact remains that sudden unexplained deaths can occur in people with epilepsy if the seizures are not controlled. So that is the point of SUDEP. So first we covered depression in epilepsy, then we covered SUDEP. Then thirdly, if the fit occurs while driving, the fit occurs while swimming. So if the seizure occurs in situations where the person cannot save himself or herself, like swimming karte samay agar seizure aa gaya, convulsion aa gaya, so that the person will drown. अगर ट्रेकिंग के लिए वो व्यक्ति गया है और वहां फिट आ गई है, he might fall down from a height and that can lead to death. So if fits occur in situations where the person is unprotected, unsafe, then that can also lead to death, which is why the rate of death in people with uncontrolled seizures is higher. Again, let me repeat, it is uncontrolled seizure. If seizures are controlled, then the chances are same as that for everybody else. So Tony Greig, the cricketer, he did not die because of his epilepsy. He died due to other causes. As I said, Julius Caesar did not die because of his epilepsy. The fourth point I would like to make, some of the medicines which are used for epilepsy, especially levetiracetam, is notorious for this, and it is a very freely used medicine for epilepsy. This medicine can lead to depression. So if you are on treatment for epilepsy and if your seizures are under control but you are feeling depressed, then you are supposed to report that to the doctor, to the neurologist who is treating you. He will assess your treatment profile and he or she will see whether the medicines that you are on are leading to depression. So first thing is depression because of epilepsy, depression because of stigmas. Secondly, we saw SUDEPs. Third, we saw that seizures occurring in special situations.
And lastly, we saw that some of the medicines can lead to depression, and that can be easily treatable. You have to report to your neurologist, and the neurologist will change your medicines. So that was a very important question, Aditi. These people with epilepsy shouldn't be doing jobs with responsibility and stress. So, ma'am, this is because of that they could have risk of doing some job, or because they could get fits or something. See, Harsimran, this is a myth. So why this myth started, we cannot say. But fact is that it is not true. People with epilepsy can hold jobs with great responsibility. As I said, I could be having epilepsy. So I Okay. know a neurosurgeon who has epilepsy and has been even operated for it, and he is still working as a neurosurgeon. So there are a lot of my patients who are in IT companies, who are in managerial posts, who are looking forward to their promotions, and they're holding down their jobs. They are efficient people. Uh, uh, One of my epilepsy persons, a person who's being treated for Okay. epilepsy by me, has got married to another of my patients who is being treated for epilepsy, and they are both living very happily. She is a doctor and he is in the office of that institute. They are both working also in the same place. So this is a completely wrong notion that people with epilepsy cannot hold down jobs with responsibilities. As I said, that some celebrities also have epilepsy. If 1 in 100 people have epilepsy, imagine how many Indians have epilepsy. Problem is that Okay. this is just not talked about. That's the thing. So people with epilepsy who are well controlled, they are living near normal lives. I'm saying near normal because they are actually facing extra challenges. और वो challenges face करके भी वो normal दिखने वाला ही life जी रहे हैं. So actually their Yes, struggle is ma'am. bigger than people without epilepsy, and they are living lives which are normal in nature. So in fact I would say that their sense of responsibility can even be higher, because they have to prove कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, नहीं मैं ये कर सकता हूँ. It is only uncontrolled epilepsy people who have lots of medicines going on, जिनको वो जो 20% है, जिनको बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है, जिनके ब्रेन के एमआरआई में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको कभी कभी कॉग्निटिव डिस्फंक्शन होता है. मतलब उनको थिंकिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर दोज 20%. Majority people, 80% of people who are well controlled with 2 drugs or maximum 3 drugs, and they have not had seizures for the past 2 years, they are living normal lives, and they can hold down positions of responsibility. They can be good team members, they can be good leaders, and they can be good family members. This thing mostly happens in rural areas and in some schools as well. When someone having a fit, or he or she should be held down tightly, and the clenched teeth should be separated as soon as possible. मतलब उसके कान के नीचे बजाते हैं, चप्पल सूंघाते हैं, प्याज सूंघाते. So is it true, or is it this is doing, ये जो कर रहे हैं सब लोग, ये सच है, सही है या गलत है? तो ये इंडिया के बहुत खास मिथ्स हैं कि चप्पल सूंघानी चाहिए और प्याज सूंघाना चाहिए. एंड एज आई सेड बिफोर, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पैराडॉक्सेस. On one hand, we are sending Mangal mission to Mars and we are going to the moon and everything. And on the other hand, रास्ते में किसी को फिट आती दिखी कि सडनली वहां पे बहुत सारे ज्ञानी लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि मुझे मालूम है इसको कैसे मैनेज करना है, और चप्पल सूंघाओ, और सिर्फ चप्पल नहीं, चमड़े की चप्पल सूंघाओ. तो उसमें भी उन्होंने कैटेगरीज करके रखी हुई है. उनका शायद अपना रिसर्च चलता होगा. बट इसमें मैं उदाहरण दूंगी फोन का. जब हमारा फोन हैंग होता है तब हम उसको चप्पल नहीं सूंघाते. जब हमारा फोन हैंग होता है तब हम उसको प्याज नहीं सूंघाते हैं, क्योंकि हम सिंपल तरीका करते हैं. वी जस्ट स्विच द फोन ऑफ एंड देन वी स्विच इट ऑन अगेन. तो जब फिट आती है, सीजर, कन्वर्जन, फेफड़े, मिर्गी, अपस्मार, इसको अनेक शब्द हैं. तो जब ये सीजर आता है तब ब्रेन की कुछ पेशियों की वजह से पूरा ब्रेन हैंग हो जाता है. ये बड़ी मिर्गी का बता रही हूँ मैं, जनरलाइज सीजर्स का. पूरा ब्रेन हैंग हो जाता है.
तो अगर हैंग हुआ है ब्रेन किसी फोन की तरह, तो हम उस व्यक्ति को क्यों चप्पल सूंघाते हैं, क्यों उसको प्याज सूंघाते हैं। मेरे एक पेशेंट के तो आंखों में नींबू निचोड़ा गया था, क्योंकि उनको लगा कि नींबू निचोड़ने से आंखों में ही विल बिकम अवेक फास्टर. So actually, all the conscious people are abusing the person who is having a seizure. वो उसके बुरे हाल कर रहे हैं. और चप्पल सूंघाने से, चप्पल कहाँ कहाँ घूम के आई होगी शहर में, चप्पल सूंघाने से हम सारे जर्म्स उसके नाक के थ्रू उसके लंग्स में भेज रहे हैं. तो पेशेंट को अगर एस्पिरेशन निमोनिया हो गया, तो वो कहाँ के जंतुओं से हो रहा है वो कुछ भी हमको नहीं समझेगा कि अब चप्पल की वजह से वो हुआ होगा. फैक्ट क्या है, अभी तक मैंने जो बातें की वो सब मिथ्स है, वो सब भ्रम है, वो सब गलत चीजें हैं जो हम उस व्यक्ति के साथ करते हैं. करना क्या है, जब किसी को दौरा आता है हमारे सामने, अगर छोटा दौरा आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है. छोटा दौरा जब आता है तब पेशेंट खुद होश में रहता है और एक हाथ या सिर्फ चेहरा ऐसे हिलता है. उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, उसको बैठने देना है, लेट दैट सीजर गो अवे. अगर एब्सेंट सीजर्स आते हैं जिसमें पेशेंट थोड़ी देर के लिए ऐसे ब्लैंक हो जाता है, तो कुछ भी नहीं करना है. दैट पेशेंट्स केयर गिवर हैज टू बी टोल्ड कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ये ब्लैंक आउट हो रहा है बीच बीच में. अगर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स आते हैं, मतलब पेशेंट थोड़ी देर के लिए ऐसा करेगा और ऐसे मूवमेंट्स करेगा, तो उसमें भी पेशेंट इज सिटिंग स्टैंडिंग, पेशेंट हैज टू जस्ट बी मेड टू सिट फॉर सम टाइम. एंड अनलेस पेशेंट बिकम्स कंप्लीटली अवेयर एंड अलर्ट, उसको पानी भी पीने के लिए नहीं देना है, क्योंकि ऐसे ऐसे करते समय तुमने पानी फोर्स किया तो अगेन दैट विल गो इन लंग्स. बड़ी मिर्गी जो है, जिसको हम जनरलाइज सीजर बोलते हैं, जिसमें चीख निकलती है, हाथ पैर ऐसे ऐसे हो जाते हैं और पेशेंट गिर जाता है, जीभ कट जाती है, खून बहने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, तो इस मिर्गी में क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी उसको सूंघाने की जरूरत नहीं है. और दांत भिज जाते हैं, टीथ क्लेंचिंग, दाक्षिणावस्थेशी, एंड दीज आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो होता क्या है कि पेशेंट के 100% मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और हम जो उसको मदद करने जा रहे हैं, हमारे 30% ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो हमने अगर उसको बांध के रखा, खींच के रखा, पकड़ के रखा, तो एक्चुअली उसके बोन्स फ्रैक्चर हो सकते हैं. in past 6 months I have had two such patients who had fractures during seizures. तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है कि हम बाहर से किसी ने उसको पकड़ के रखा तो द बोन कैन गेट फ्रैक्चर्ड. एंड दातखीळ काढायला जर बघितली, इफ यू ट्राय टू रिमूव, इफ यू ट्राय टू पुट समथिंग इन द क्लेंच्ड टीथ, तो वो चम्मच की वजह से तुम उसको इंजरी कर रहे हो क्रिएट. उस चम्मच की वजह से उसकी जो जीभ कटी है वो और कटेगी. फैक्ट ये है कि जैसे हम फोन को ऑफ करके रिबूट होने वाला है फोन, सेम वे ब्रेन में थैलेमस नाम की एक जगह है जहां पे ऑटो ऑफ और ऑटो ऑन का एक बटन दिया हुआ है. तो उस फिट की वजह से वो स्विच ऑफ होने ही वाला है ब्रेन उसका, और जब वो ब्रेन स्विच ऑफ होगा तभी वो जो दात भिज गए हैं, दातखीळ जी बसली आहे, तेव्हाच ती उघडेल जेव्हा ब्रेन स्विच ऑफ होईल. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो दैट लोगों को क्या लगता है, जो भीड़ जमा हो रही है, वो जोर जोर से उसके वो दांत खोलने की कोशिश करते हैं, जबड़ा खोलने की कोशिश करते हैं, और जब जबड़ा खुलता है तभी पेशेंट को होश आने लगता है. उनको लगता है जबड़ा मैंने खोला इसीलिए पेशेंट को होश आया, बट द फैक्ट इज उल्टा. फैक्ट इज कि जब वो ब्रेन रीबूट हो रहा है तभी वो दांत खुलने लगते हैं और वो अलाउ करेगा तुमको दांत खोलने के लिए. मगर जो वो मैंने बोला ना कि बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनको लगता है कि मेरी वजह से उसकी मिर्गी जा रही है, बट दैट इज नॉट ट्रू. सो करना क्या है कि उसको ऑब्जर्व करना है. वो उसके आजू बाजू में अगर कुछ ऐसी चीजें होगी जिसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है, वो चीजों को हटाना है. और उसका सर भी हिल रहा है तो उसको लेटाना है, एक करवट पे लेटाना है, चेहरा एक तरफ करना है ताकि जो भी झाग है वो सब निकल जाएगा. और सांस की जो नलिका है, नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह से नहीं लेते, तो जो ब्रीदिंग पैसेज है दैट शुड रिमेन ओपन, सो दैट एक करवट पे जब करेंगे तो जीभ भी एक साइड को हो जाएगी, झाग भी निकल जाएगा और ब्रीदिंग पैसेज विल बी ओपन. तो एक साइड पे करना है और सर के नीचे कुछ भी नरम चीज रखनी है, किसी का दुपट्टा हो, कोई टॉवेल हो, कोई पिलो हो, कोई बैग हो,
वो रखना है ताकि उसको जमीन पे टकरा कर इंजरी ना हो सिर में। तो एक करवट पे करना है, सिर के नीचे कुछ देना है, दैट इज ऑल। बस ये 2 ही स्टेप्स करनी पड़ती है। बाकी क्या नहीं करना है उसकी लिस्ट ज्यादा बड़ी है, स्पेशली इंडिया में। तो मुंह खोलने की कोशिश नहीं करनी है, हाथ पैर पकड़ने नहीं है, चप्पल नहीं सूंघानी है, प्याज नहीं सूंघाना है। कुछ कुछ जगहों में हाथ में चाबी पकड़ाते हैं, उनको लगता है कि एक बार मेटल की चाबी पकड़ाएंगे तो ही फिट जाएगी। तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खोलने ही नहीं देगा हाथ, बिकॉज दैट 100% मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Is epilepsy contagious? Not at all. Epilepsy is not contagious, but as I said, 2020 में भी हम हैं अभी, और फिर भी भारत में one of the myths is this कि epilepsy is contagious। तो मेरे बच्चे को मिर्गी है तो क्या वो बाकी लोगों के साथ खेल सकता है, क्या वो स्कूल में जा सकता है, या समटाइम्स स्कूल से आदेश आता है कि आपके बच्चे को फिट आई थी तो उसको मत भेजो। बट नो, इट इज नॉट contagious। एंड जेरियाट्रिक एपिलेप्सी भी हम देखते हैं, 1/3 ऑफ आवर पेशेंट्स आर फ्रॉम अबव 60 इयर्स ऑफ एज ग्रुप। तो उनमें भी ये सवाल उठते हैं कि मेरे पापा को मिर्गी का झटका आया था, तो क्या वो अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, क्या वो फैमिली फंक्शन में आ सकते हैं, इज दिस समथिंग दैट इज कॉन्टेजियस? सो नो, एपिलेप्सी इज नॉट कॉन्टेजियस, संसर्गजन्य आजार नाही आहे Is अपस्मार। this true that only kids can get epilepsy? हरसिमरन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन मिथ है, लोगों को लगता है कि बचपन से नहीं हुई कभी मिर्गी तो अभी आप कैसे बता रहे हो। सो इन माय प्रैक्टिस एज एन अडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट, अराउंड 1/3 of patients would be from pediatric age group, 1/3 of my patients are from geriatric age group। मतलब 60 साल के बाद पहला झटका जिनको आया है वो। So the causes of epilepsy in all these age groups are different, and as you must have understood, the remaining 1/3 are from the middle age group. They are young people, middle-aged people. So the causes of epilepsy are different. बचपन में जो मिर्गी आती है वो हेरिटेबल रह सकती है, ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ गई हो सकती है, या फिर बेबी जब डेवलप हो रहा था माँ की कोख में तब उसके डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो सकती है। So those are developmental disorders, and brain infection at the time of birth can lead to epilepsy. Then as the person becomes younger and younger, then the causes of epilepsy can change। 15 to 25 years की एज ग्रुप में पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी, मतलब रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसके 2-3 साल बाद मिर्गी शुरू हो जाती है। दैट इज द कॉमनेस्ट कॉज इन यंगर एज ग्रुप। So the age group which is not wearing helmets and it is riding their two-wheelers speedily or four-wheelers speedily and getting into road accidents, so that is the age group which is highest number for post traumatic epilepsy। फिर इन्फेक्टिव कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी वो भी यंग एज में होते हैं, वो ओल्ड एज तक हो सकते हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ट्यूबरक्यूलोमा, दे कैन कॉज एपिलेप्सी इन एनी एज ग्रुप। फिर ब्रेन ट्यूमर्स कैन कॉज एपिलेप्सी इन एनी एज ग्रुप, द चांसेस आर हायर इन ओल्डर एज ग्रुप। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में जो स्ट्रोक हो जाता है पक्षाघात, जो कि ओल्डर एज ग्रुप में होता है, उसके घाव से भी मिर्गी की उत्पत्ति होती है। सो दैट इज अगेन ओल्डर एज ग्रुप। Dementia, Alzheimer's disease can start with a seizure. So patients actually memory and everything is fine, but the patient gets a seizure at the age of 65-70. First seizure at that age group. फिर 2-3 साल बाद उनका memory problem शुरू हो जाता है। So Alzheimer's can actually start with a seizure. So dementia as a cause of epilepsy can occur at an older age group. So epilepsy can start at any age. The cause of that epilepsy would be different depending upon the age group. People with epilepsy are physically limited in what they do। मतलब क्या वो सिलेंडर नहीं उठा सकते, क्या वो साइकिलिंग नहीं कर सकते, क्या वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और रोजमर्रा की चीजें हैं जो कर नहीं सकते। Is it true or false? Yes, Aman, that's a very good question. एपिलेप्सी होने से फिजिकल लिमिटेशन नहीं आता, और वो नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो लाइफस्टाइल चेंजेस हमने बताए हुए हैं कि वक्त पर खाना खाना चाहिए, प्रमाण में नींद होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम डिसिप्लिन होना चाहिए, और हफ्ते में 3-4 दिन तो भी एक्सरसाइज करना चाहिए।
So any person who does this, whether he has epilepsy, she has epilepsy or not, doesn't matter, because once you do these things, you are going to be able to have normal physical abilities. Some of the medicines used for epilepsy can cause calcium deficiency, and that has to be managed by your neurologist, which is why a person with epilepsy has to have regular follow-up with his or her neurologist, because ये जो side effects है दवाइयों के, कि विटामिन की कमी होना या फिर कैल्शियम की कमी होना या फिर कुछ और प्रॉब्लम होना, ये सब हम मॉनिटर करते हैं ताकि उस व्यक्ति की फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल रहे. So a regular follow-up with your physician, with your neurologist is extremely important, so that your physical abilities are monitored. And also, let me repeat that your lifestyle has to be a very healthy lifestyle, in which case you will not have any problems managing your epilepsy. Which says that people with epilepsy are disabled and they can't work. How true is that? Disability has been removed as a criteria for epilepsy. So the 80% of people who are well controlled are not at all disabled at all. The remaining 20% who are not well controlled and who have some problems in their MRIs, who are on multiple drugs, they do face some physical limitations, and they do face issues regarding disability. And in fact, we are working on that. But 80% of the people cannot be labeled as disabled people, and they cannot even claim benefits of disability. But if a person has something in addition to epilepsy, like cognitive dysfunction, because there is another problem in the brain, or if they are on multiple medications, because as I said, refractory epilepsy, that means epilepsy that is not controlled by 2-3 medications, and more than 2-3 years are over and still the person is getting fits, refractory epilepsy, only in that case then we assess them for disability. Otherwise 80% of people who are living normal lives, they are not disabled at all. Thank you so much everybody for all these questions, and I hope our discussion will stimulate more questions in the mind of the audience, and they will ask us more questions which we will address in our future meetings. Yes, ma'am. Yes, ma'am.